Good afternoon, sir. I hope you can hear me. Yeah, good afternoon, Anuj. Avinash will be hosting today's session. He is joining us in a minute. Meanwhile, I am here. So, good afternoon, everyone. I hope you all can hear me and see Arpit sir clearly. Well, You can good write afternoon, yes. guys. Good afternoon. Avinash is here, so I'll just hop onto the backstage. Hello everyone. Am I audible, Arpit? Yeah, clearly. Great. Sorry guys, actually I was facing some technical issues. So welcome everyone. Welcome to the Bank Nifty Expiry. We have Arpit sir today with us. आप लोगों ने already देख लिया होगा. Actually I was a bit late today, so Arpit sir joined before me. So let's wait for Arpit sir. Arpit sir, is it good to go? Yeah, I'm just setting up. It'll just take barely 30 seconds. So just setting up the frame. Sure, Arpit sir. Just a second, guys. Hold on. We have a lot of queries. Yes, definitely we'll try to cover all those queries. Let's wait. Go through all the market updates. आज मार्केट कैसा है, तेजी है, मंदी है, कौन से स्ट्राइक्स में हमें ट्रेड करना है, स्ट्रैटेजी करना है, आपके सारे सवालों का जवाब अर्पित सर आपको दे देंगे. So just couple of seconds more. Yeah, Avinash, we are good to go. Over to you, Arpit sir. Yeah, the screen is visible. Yes, it's absolutely visible. Okay, perfect. Yeah. So very good afternoon, guys. Welcome to Bank Nifty Expiry Play. And today we have seen a bit of negative bias mainly due to global weakness. कल हमने एक अच्छी रिकवरी देखी थी बैंक निफ्टी में, but the thing was आज वो सस्टेन नहीं हो पाई. निफ्टी ने एक नए फ्रेश लाइफ टाइम हाई मारे थे इस वीक की स्टार्टिंग में 25,333 and post that it is consolidating. So starting with first, as far as Bank Nifty, so first we start with Bank Nifty. Avinash, the screen is visible, right? Yes, Piyush. Yes, Arpit sir. No worries. Yeah, so if you see the daily chart of Bank Nifty, if you see overall, so Bank Nifty is trading in a range. If you see yesterday, it gave a very strong close above 51,500 levels. However, if you see today, we have seen a gap down opening, but over that, since morning tick, if you see, this is the hourly chart. And why I'm focusing on the hourly chart, because I guess yesterday was one of the best Fin Nifty expiry that we have witnessed. And a couple of weeks back also, we have seen a very sharp rally in Bank Nifty in options. So if you see the hourly chart for Bank Nifty, it is trading in a range between 51,500 on the upper band and on the lower band 51,250. So yeah, आज खास देखें तो 200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी है. लेस देन 200 पॉइंट्स इज द रेंज, इंट्राडे रेंज फॉर बैंक निफ्टी. दैट इज 51,300 इज द सपोर्ट जोन and ऊपर में 51,450, 51,500 is the resistance zone. And this is the hourly chart. That's why I'm showcasing the slide itself. That clearly shows that so far there has not been major momentum for option buyers so far. And अगर हम chart wise देखें, so upper band में 51,500 एक hurdle है, नीचे में 51,300 एक support zone है. Also looking at the OI data, so maximum call OI we have seen is 51,500. And on the downside 51,300 is the maximum put writing. So today so far it has been the day for option writers. So option seller का दिन रहा है so far because it got stuck in a tight range. VWAP के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी का VWAP is around 51,550 levels, 580. So it clearly hurdle है. बट अच्छी बात ये है, कल हमने जो रिकवरी देखी थी 51,250 से, आज वही लो मारा है और इमीडिएट बेसिस पे हमारा बायस स्लाइटली पॉजिटिव ही रहेगा बैंक निफ्टी में जब तक बैंक निफ्टी 51,300 के ऊपर रहता है. स्पॉट लेवल से जब तक बैंक निफ्टी 51,300 के ऊपर रहता है हमारा बायस पॉजिटिव रहेगा. सेम टाइम 51,500, 51,550 एक हर्डल जोन है. सो फार व्हाट वी आर डूइंग इज, सो फार हम मॉर्निंग से ही बाय स्टांस पे ही है, बट मूव्स बहुत छोटे हैं. सो एज ऑफ नाउ वी आर ट्रैकिंग टू स्ट्राइक्स, 51,300 कॉल
45, अपर बैंड में 51,500 नहीं निकला है और नीचे में 51,350 नहीं निकला है. Also, guys, I'm closely watching 51,480, 51,500 levels in the spot levels. अगर वही निकलता है तो एक मेजर ब्रेकआउट आ सकता है, बट अगर तब तक नहीं रहता है so sideways to consolidative bias रहेगा. Now talking to Nifty, as Nifty has been the huge outperformer in last month itself. It is trading at life highs, some profit booking we have seen for high levels. So stupendous rally of last 15 days. Till yesterday, we have seen 14 positive consecutive closing sessions. आज हमने नेगेटिव ओपनिंग देखी और एक डल है ओवरऑल एक 100 पॉइंट की रेंज में. इमीडिएट बेसिस में निफ्टी में 25,000 का सपोर्ट है और ऊपर में 25,300 का हर्डल है. सो निफ्टी ओवरऑल बायस पॉजिटिव ही है. जब तक 25,050 के ऊपर रहता है बायस विल बी पॉजिटिव. Upper band 25,200, 25,250 is the hurdle. So now coming back to Bank Nifty, as of now हमने दो स्ट्राइक शेयर किए हैं, 51,300 and 51,400 स्ट्राइक. 51,300 का कॉल चल रहा है अराउंड 120, 125. 51,400 का कॉल चल रहा है अराउंड 35, 40 लेवल्स. सो इसके साथ अगर हम बात करें फॉर स्टॉक्स वाइज कि बैंक निफ्टी अगर चलना है तो कौन लीड कर सकता है, सो ये दामोदरा में इसके ऊपर पूरा डिपेंड है. एचडीएफसी बैंक जो एक साइडवेज हो गया है जिसकी वजह से मेजर कश नहीं है. इसके साथ अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक का भी चार्ट देखूं सो आईसीआईसीआई बैंक भी कंसोलिडेट कर रहा है. कोटक दिखा रहा है कि शायद थोड़ा सा मूव आ सकता है, अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है बट एक थोड़ा रिलेटिवली स्लो है. सो वी आर जस्ट लुकिंग एट द डेटा, आल्सो लुकिंग एट द स्टॉक्स. सब स्टॉक्स एक साइडवेज की रेंज में ही है. सो वी आर वेटिंग फॉर द सेटअप. ओवरऑल बायस इज पॉजिटिव. Consolidative bias to consolidative, positive to consolidative. 51,300 इंट्राडे सपोर्ट है, ऊपर में 500, 550 हर्डल है. सो स्ट्राइक्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिए अविनाश, एंड आल्सो वी हैव अपडेट कि कौन से लेवल्स पे एंटर हम करेंगे वो बताएंगे. एज ऑफ नाउ रेंज दी है और स्ट्राइक्स ऑन रडार दी है. इसके साथ अगर एक इंडिया विक्स भी हम देखें वोलेटिलिटी चार्ट, सो थोड़ा सा स्पाइक हमने देखा है 4.5% का, मेनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वीकनेस. सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो मेजर चेंज इन द ट्रेंड. निफ्टी में 25,050 का मेजर सपोर्ट है. बैंक निफ्टी में पोजिशनली 51,000 का और इमीडिएट बेसिस पे 51,300 का. सो इन द मीन टाइम वी कैन टेक कपल ऑफ स्टॉक क्वेरीज. Also the stocks that are looking good, we'll discuss about it, the BTST ideas, the conviction delivery ideas, and in the meantime we can take few stock queries around. Okay. So there are a lot of people, just have a queries that कल आप मार्केट एनालिसिस में लग गए एंड उतने में फिन निफ्टी 3x हो गया. गाइस हमारे एक्सपर्ट्स सेशन के पहले से ही सारे डेटा एनालाइज करते हैं कि हमें आज किस स्ट्राइक्स में प्ले करना है. जस्ट दैट वी ऑलवेज ट्रेड ऑन आवर रिस्क टू रिवॉर्ड सिचुएशन ओनली, जहां पे हमारा रिस्क भी उतना ही होगा, हमारा रिवॉर्ड भी उतना ही होगा. इस हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं. सिर्फ ट्रेड देना है इसलिए हम लोग नहीं देते. वी ट्राई टू मैक्सिमाइज इट, कि प्रॉफिट जहां पे होगा प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज, हम लोग उसी स्ट्राइक में ट्रेड करते हैं. तो दैट इज द ओनली रीजन कि हम लोग मार्केट का आउटलुक बताते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द मार्केट इज प्लेइंग, इन विच डायरेक्शन इज गोइंग. तो यही एक रीजन है कि विल टेक 5-10 मिनट्स जहां पे हम लोग आपको बताते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि अंधा ही ट्रेड नहीं देना हमें, राइट. दैट इज द ओनली रीजन वी हैव एक्सपर्ट्स विद अस, राइट. इसलिए हम उनका सजेशंस लेते हैं. So that is the only reason we cover all the market outlook. क्या है वेक्स, आज स्ट्राइक्स कौन सा है, कैसी थी, सुबह से तेजी थी, मंदी थी. That is the only reason we cover the market outlook. So yes, Arpit sir, we will just move to the stock queries. So Arpit sir, before we move to the stock queries, do we have any BTST trade or any stocks that look positive we can carry for the positional wise? If you see immediate basis, if I see the setup wise, insurance space, BTST we are looking for the opportunity because today after a gap down opening, market has stuck in a range. So stock specific action ही चल रहा है, but from a delivery wise perspective, ICICI insurance space we are quite bullish. So पूरे इंश्योरेंस बेस में हम काफी बुलिश है. उसी में हमारा टॉप पिक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल. So I think from a 5 to 7 days perspective to 15 days, ICICI Pru we can expect good momentum towards 800 levels. So ICICI Pru हमारे कन्विक्शन डिलीवरी आइडिया रहेगा. 760, 765 के रेंज में बाय कर सकते हैं. करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं. 740 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर 800, 820 के लिए. Also along with that if we see pharma में selective action है. So एक अपोलो हॉस्पिटल जो डिलीवरी आइडियाज के सबसे पोजिशनली अच्छा लग रहा है, अराउंड 6,900 पे चल रहा है. 6,700 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 7,100, 200 के लिए. तो फर्स्ट इज आईसीआईसीआई प्रू, सेकंड इज अपोलो टायर एंड थर्ड इज जेके सीमेंट. सो अगर जेके सीमेंट का हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो मंथली सेटअप पे ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है. दैट लुक्स वेरी स्ट्रांग.
And in the meantime, what I can say, we have seen some spurt in the Bank Nifty option. So let's do what? First, we'll focus on the Bank Nifty trade as हम जो strikes देख रहे थे. We will go with 51,400 long straddle Bank Nifty. So I'll repeat, 51,400 का कॉल अभी चल रहा है 50 और 51,400 का पुट अभी चल रहा है 12. So right now अभी पेयर चल रहा है अराउंड 65 पॉइंट्स. So ये लेवल पे हमारी बाइक अभी अराउंड चल रहा है अराउंड 60 पॉइंट्स. So I'll repeat, हम बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी के थ्रू प्ले करेंगे. 51,400 का कॉल एंड पुट विल बाय. राइट नाउ द कंबाइंड प्रीमियम इज कोटिंग अराउंड 5860. अभी मैं एक बार रीचेक कर लेता हूं. या इट्स इन द रेंज ऑफ 60. कंबाइंड स्टॉप लॉस रहेगा 25 पॉइंट्स का, अपसाइड में 85 और 100 के टारगेट के. सो आई रिपीट, अविनाश, वी आर गोइंग विद बैंक निफ्टी लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी by buying 51,400 call and put at cost of around 55 to 60 points. Stop loss रहेगा 20 का, upside में 85 100 के लिए. I hope the strategy is clear, Avinash. Yes. So guys, हमने strategy chat box में डाल दिया और पिन भी कर दिया है. Just repeat again, guys, हमने long straddle स्ट्रेटेजी लिया है जिसमें हमने 51,400 का कॉल और दोनों हमें साथ में बाय करना है with a combined premium of 60 points or 60 rupees, you can say, with a stop loss of 20 to 25. I guess you can use 25 as a stop loss as suggested from Arpit sir, and the target for the upside will be 85 then 100. Yeah, so coming back to stocks wise, we have shared ICICI approved from condition data. As we were discussing about JK Cement, so cement space has seen good traction in last couple of days. So JK Cement technically wise is looking very strong. Almost past 7 months से it was stuck in a range. आज fresh range breakout दिया है monthly और weekly scale पे. Weekly scale पे classical range breakout above 4,550 levels. So I think good 7 to 8% rally can be seen in coming weeks. So JK Cement we can go long from a 10 to 15 days perspective. 4,600-650 के रेंज में बाय कर सकते हैं. 4,450 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 4,850 then 5,000 के लिए. I'm giving bigger target because the time frame is big positionally. So ICICI Pru, Apollo Hospital and JK Cement looks good from a positional perspective. On the BTC side we are scanning and definitely will share the trades. In the meantime, हमने बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी दी है long straddle by buying 51,400 call and buying 51,400 put at net cost of around 55 to 60 points. Stop loss रहेगा 20 points का, upside में 85 और 100 के टारगेट के लिए. Yeah, keeping in mind that, just to add Avinash, keeping in mind that ये एक tight range में play कर रहा है बैंक निफ्टी. So if we see a spot of 60 to 80 points on either side, so definitely we can make some money out of it. But एक काफी consolidated है जिसके वजह से ये strategy हमें ये थोड़ा risk reward favorable है. That's why we have initiated the strategy कि अगर 50 से 70 से 80 पॉइंट का भी swing अगर आता है, so we can take some move out of it. Yeah, Avinash, you were saying something. So Arpit sir, काफी लोगों को straddle क्या है पता नहीं होगा, right? So could you please explain why we are exactly playing the straddle and what is the reason behind it and how exactly they should initiate this trade? You know, पहले call buy करना फिर put buy करना. Yes, as we've seen from last couple of weeks, we have been given the strategy, but just for the people, those who are there in the system for the first time and definitely a kind of revision. So long straddle is generally a strategy it's barely very low, around 55-60 the combined pair. So इसमें advantage कब होगा कि अगर यहाँ से 80 से 70 से 80 पॉइंट का स्विंग अगर आ जाता है तो हम डेफिनेटली स्ट्रेटेजी में पैसा बनाएंगे. अगर मूवमेंट नहीं भी आता है तो भी नेकेड कॉल या नेकेड पुट बाय करने की जगह आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी और लूजिंग मनी वुड बी मच मोर लेस. सो जिसके वजह से आपका प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी और उसके साथ आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे. सो उसमें हम एक कॉल बाय करते हैं, एक पुट बाय करते हैं. टोटल कंबाइन एसएल डालेंगे. इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी का एसएल नहीं रहेगा, कंबाइन एसएल रहेगा. तो स्ट्रेटेजी का है अराउंड 20 पॉइंट्स, वो रहेगा कंबाइन एसएल. और अपसाइड में मोमेंटम डेफिनेटली या तो अगर बड़ा स्विंग आता है तो कॉल की तरफ बढ़ेगा या तो नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है तो पुट की तरफ होगा.
So to play the swing for the last half an hour, expect a move of 80 to 100 points, and to take the benefit, also to make the higher chances or higher probability of making money and the risk is low. So हम ये strategy initiate करते हैं. जैसे बात करते करते एक BTST आइडिया भी हमें नजर पे आया है, और वही है pharma has been the flavor for the month from past couple of weeks. So Lupin is a BTST idea. So overall strong uptrend में मंथली वीकली सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है. डेली स्केल पे फ्रेश रेंज ब्रेकआउट दिया अराउंड 20 to 50 लेवल्स के ऊपर. So Lupin strong uptrend. Lupin one can long at current levels 2265, 2270 levels. स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 2240 का, ऊपर में 2320, 2340 के. Just to revisit the strategy, what is the premium hold hovering around? Just check the premium. So it's around so risk reward काफी favorable है because premium काफी कम है, and we want कि अगर कोई swing मिलता है, so we'll try to make the most of it. In the meantime, Lupin is the idea that we have given. BTST idea. Apart from that, ICICI proved positionally, and JK Cement also looks very strong on chart for 10 to 12 days perspective. These two ideas are looking very strong. And BankNifty is still in trading in the range itself, but our strategy हमारी open है and we'll update on it. ग्रेट. तो जिन्होंने भी गाइस अभी ज्वाइन किया है, जस्ट टू रीआइटरेट कि हमने बैंक निफ्टी का 51,400 का कॉल और पुट दोनों बाय करने का है लॉन्ग स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी में, जहां पे आपको कंबाइंड प्रीमियम होगा 60, स्टॉप लॉस कंबाइंड होगा 25 और टारगेट अपसाइड पे 85 फिर 100. तो स्टॉप लॉस जो कंबाइंड होगा गाइस आपका, अगर आपका कॉल है 10 और पुट है आपका 15, तो ये आपका कंबाइंड स्टॉप लॉस है फॉर एग्जांपल. तो अगर इसके नीचे आता तो आपको अपना पोजीशन शॉर्ट करना है, चाहे वो कैसे भी हो. दोनों का मिला के अगर 25 पॉइंट हो रहा है तो आपको स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है तो आपको एग्जिट करना है. दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू प्ले, राइट. तो जैसे अर्पित सर ने हमें बताया कि बहुत नैरो रेंज में मूव हो रहा है, एकदम साइडवेज है, तो हमारे 60 से 80 पॉइंट का जो रेंज है वी हैव टू प्ले इन दैट ओनली 80-85 पॉइंट्स. सो लेट्स मूव टू स्टॉक क्वेरीज. अर्पित सर Sure. काफी सारा कन्विक्शन आइडियाज भी दे दिया है इंश्योरेंस में और बीटीएससी में, right? So your view on NHPC? NHPC. So if we see overall, the stocks have been form a strong base around 93, 94 levels. Daily scale पे range में फंसा हुआ है, but अच्छी बात ये है कि नीचे hammer pattern kind of बना, तो एक support है 93, 94 levels के around. At the same time 100 के वहाँ struggle कर रहा है. So I think एक range है positive to consolidative. Immediate support है 94 का. अपसाइड मोमेंटम 100 के ऊपर ही आएगा 102 104 के लिए. सो 94 के ऐसे होल्ड करें, धीरे धीरे आपको 104 105 तक का मूव दिख सकता है. Motherson bought 2,000 shares at 200. Motherson Samvardhan, right? Samvardhan Motherson, right? So overall the stock is very strong uptrend. मंथली पे काफी एक हमने अच्छा मैसिव ब्रेकआउट देखा था लास्ट मंथ. पोस्ट दैट पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है 180 से लेके 200 की रेंज में. सो आई थिंक कंटिन्यू टू होल्ड. पिछले 4 से 5 दिन से गिरावट हमने देखी है. सो आई थिंक 200 पे अगर किया है ऐड, इस लेवल पे आप और ऐड कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं. 188 का स्टॉप लॉस रख के आपको धीरे धीरे इसमें 198 2022 तक का मूवमेंट दिख सकता है. मदरसन सुमी एज वी आर डिस्कसिंग इज अ डेज हाई, सो वी कैन एवरेज एट करंट लेवल्स. आप देखें तो क्लासिकल 50 डेमा को होल्ड कर रहा है पिछले ऑलमोस्ट काफी टाइम से. सो रिस्क लॉट इज फेवरेबल, आपकी कॉस्टिंग भी रिड्यूस हो जाएगी और धीरे धीरे आपको ऊपर प्रॉफिट बुक करने के भी लेवल मिल जाएगी. एंड व्हाट अ coincidence, as we are discussing also, that is another BTST idea we have shared by our team itself. So Motherson Sumi is another BTST idea, as we are already discussing and showing the live chart. So 192 193 की रेंज में बाय कर सकते हैं. 188 का स्टॉप लॉस रख के 200 के लेवल.
back to the Bank Nifty trade, Bank Nifty is also the premium is around 45, 46 points itself. So far, there has been no major swing on the either side, but still we'll wait for a couple of more minutes. As we have already given a low risk trade strategy, and the probability is also higher. So comparatively, the risk reward is kind of 1:1. So we'll wait for a couple of more minutes and we'll update on it. As of now, the premium for the combined strategy is going around 44, 45 points. Great. जैसे से हमने ऑलरेडी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो हमने पोजिशनल ट्रेड दिया था हमने पिन कर दिया. प्लीज चेक द पिन्ड मैसेज. Sorry, what is this message? Okay, so Arpit sir, what is your view on Reliance for the next week? Reliance industry, Right. Okay. So if you see overall, Reliance has been a lackluster, stuck in a range between 2980 to around 3080 levels. And जब तक ये 2070 और 3080 नहीं निकलता तब तक एक साइडवेज रहेगा. अगर आप वीकली सेटअप भी देखें तो एक रेंज में है. नीचे सपोर्ट है 2080 का, ऊपर में 3080. It's more of a consolidated to sideways stock. 50 को होल्ड कर रहा है, but as of now there is no major thrust. Just to add to this thing, JioFin looks good. कल परसों ने एक अच्छा मूवमेंट देखा था अच्छे वॉल्यूम के साथ. तो JioFin अगर प्ले आउट कर सकते तो यहाँ से 4 to 5% का मूव दिख सकता है. So JioFin is relatively placed as compared to Reliance. हमारे क्लाइंट का काफी समय से क्वेश्चन आ रहा है. Bajaj Housing Finance का IPO. I mean, okay, you want to know about if we should apply or not, अगर कैसा है? Yes. So ideally, if we see the rally we have seen in the Finserv, Finance, auto stock, one of the major reason was behind that the IPO itself. Generally, the thing is overall such big companies or big conglomerates generally holds a very good goodwill. So if in terms of IPO wise, from past couple of months, IPO market has been quite good. काफी अच्छा liquidity है, काफी अच्छा pumping है. So I think from apply perspective, definitely you can apply. Now, question about holding or listing gains, that would be second thing. But from apply perspective, definitely you can apply for it. We'll just revisit the Bank Nifty strategy trade. Right now, the premium is quoting around back to around 43, 45 levels itself. So as of now, there is no major swing. हमने 55, 58 के levels में recommend किए हुए. 7 to 8 points का decay हमने देखा है. But as you see, Bank Nifty is still trading in that range itself. 350 on the support side and ऊपर 500, 470, 480 is the hurdle zone. So वही range में ही play out हो रहा है. I'll just open up the 15-minute chart also. Today so far has been the day for the option writers, but no worries as we have the market. So market में definitely हमें opportunities मिलेगी भी. So we have tried. The strategy is still open. कोई भी स्ट्रेटजी पे अपडेट रहेगा, विल अपडेट ऑन इट कि हमें क्या पोजीशंस लेनी है या एग्जिट कब अगर करना है तो किस लेवल पे एग्जिट करना है. एज ऑफ नाउ वी आर ट्रैकिंग द कंबाइंड प्रीमियम अराउंड 40 42 पॉइंट्स itself. We'll wait for couple of more minutes. अगर मूवमेंट नहीं अगर आता है then we'll take a call. Sure. In the meantime, Lupin and Mothers and Sumi, Samvardhan we have shared as the BTS idea. Shakes for the industry view. Should we enter at the current level? Which industry? Sheikh Swati, SHEKH SWATA. SHEKH. Right. Okay. Yeah. Oh, this is a filter, subject counter. I think definitely it's technical would be difficult to comment on this thing. But as you see the price chart also, there is a very abnormal move from 4 to 8 levels. So I think purely look at, I don't really can't comment on this thing. So better we can take some other trade. Right. Beyond Tata Steel, क्योंकि हमने JioFin पे already बता दिया. So yes. Tata Steel, if you see, metal pack has been on a lackluster side, and within that, Tata Steel is one of the most underperformer. If you see setup wise also, it has got stuck in a range. ऊपर 156 नहीं निकल रहा, नीचे 145 नहीं, पिछले almost 15-16 दिन से. So I think एक range bound space है with negative bias. I would suggest कोई भी bounce आता है around 156, 157 तक का, तो हमारी exit करने की सलाह रहेगी अगर trading बैठे तो. और positionally wise 138, 140 का major support है. Okay, great. Your view on Masdog, can we make a fresh entry in this stock? So this counter has been in use for quite a long time, and if we see काफी पैसा बना भी था, but last couple of weeks में हमने काफी correction देखा है स्टॉक में. So what I would suggest is
बेस फॉर्मेशन हो गया अराउंड 4400 4500 के अराउंड, एंड इमीडिएट बेसिस पे नीचे अच्छी रिकवरी भी देखी है. सो आई थिंक अगर बाय करना है थोड़ा हाई बीटा काउंटर है, 4450 का स्टॉप लॉस रख के आप ऊपर 5100 के लिए बाय कर सकते हैं. बट हैविंग सेड दैट, ये काउंटर थोड़े से हाई बीटा हो गए, सो फॉलो स्ट्रिक्ट स्टॉप मैकेनिज्म इन दैट केस. Just to give an update on Bank Nifty, the put we have seen some spot. Now the strategy is back to around 45-50 points, and as we are already discussing here, totally it's been a strategy for the option writers so far. Option writers के ग्रुप में रहा है 150 पॉइंट की रेंज में. I'll just open up the Bank Nifty chart. Yeah, so if we see the premium also right now is around 43-44 points. We'll wait for just couple of more minutes. अगर नहीं रहेगा, so we'll exit the trade, because there is no point unnecessary making losses if we don't see any major momentum. And this is the best part about the strategy. We were expecting some move on the upside, but instead of upside, it has gone down. And this is the best part about long straddle, in which the direction helps you out. And now we're seeing some spot input. The strategy is now back to cost around 45-50 points. So this is the best part about the strategy. 48-49 points is the combined pair. 50, 51, 52, 53, 54. So अभी net costing हमारी strategy का around 53, 54 हुई है, because we are seeing some dip in Bank Nifty. So I think some can partially book it, because we haven't seen any major move so far. So I think it's slightly above cost. So we'd advise to book it. Great. So guys, जो भी partially profits book हो रहा है, please book your profits, because we can hardly see a momentum in this. And yes, we will keep a track for more couple of minutes if we can see any major momentum in this, जो कि हम लोग 3 PM tick का जो wait करते हैं हमेशा. Let's see. Also, just to add one more thing on it, from past couple of times, if we see that 3 PM tick, that phenomenon has changed little bit. Right. Now they sometimes we see a tick around 230 itself, and this is the beauty of market. Whenever something gets repetitive, market tends to change it dramatically. So that's the beauty about the markets. That comes always with a surprise element. So we have initiated our exit from the strategy near to cost almost, because there was no major gains. As you've seen, it has got again stuck in a range between 350 to 450 levels. Since morning, that was a setup. We tried to play it out, but we have exited. Stock ideas from a position perspective is ICICI Pro and JK Cement. Immediate basis BTST Lupin and Motherson as a BTST ideas that we have shared. So Avinash, we can take 1 or 2 stock queries more, and then accordingly we can close it out. तो गाइज जो कॉस्ट पे हमने एंटर किया था उससे 4-5 पॉइंट ही ऊपर गया था, तो जिन लोगों ने भी प्रॉफिट बुक कर पाया, सो दैट इज वेल एंड गुड. नहीं तो जो भी कॉस्ट पे हमने एंटर किया है ट्रेडिंग नियर दैट ओनली यू कैन एग्जिट फ्रॉम योर पोजीशंस. एंड कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कैसे प्रॉफिट बुक किया, कहां प्रॉफिट हुआ. सो दैट्स व्हाट आई सेड कि हमारा सिर्फ 2 से 4 पॉइंट का अपसाइड है. Yes, absolutely. So having said that, there's no major profit. It's near to cost or marginally near that. But at least whatever is saved, that is also very important. Unnecessarily, we don't want to make any decay for the option premium, because when the options are buying side, so you have to play as per the market setup. So the people who are writing loss हुआ है, I'm not sure guys कि आपका लॉस कैसे हुआ, because जो कॉस्ट पे हमने बाय किया था उसी कॉस्ट पे एग्जिट किया है. और if you are trading into FNO, 2, 5, 10 points is something you have to keep that radar की ये पॉइंट का हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, right? So this is exactly all about options trading, right? So make sure you always should not lose more than 5% in your single trade. ये तो हम हमेशा बोलते हैं. Due to market में momentum ही नहीं है, so we are also trying every possible way कि strategies में भी अगर बनता है तो that's well and good. In the meantime, just want to add, Lupin is a BTC trade and it's giving strong range breakout also. So guys definitely can go for that trade. Looking very strong. Daily पे अच्छा close हमने already share किया levels, but at least stocks में momentum है तो we can make the most of it from it. Right. So I can see one of our clients Sachin Saloki जी ने अपने ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेजा and he definitely made a profit of 4,000. I can completely see it. So that's how exactly you have to play, guys. So आपको नीचे लेवल पे इन्होंने बाय किया and they made a profit of 4,000. So it's just that you have to be that active and you have to be that quick, right? So
Absolutely. Thank you. I mean, also, one more thing I just to add, but sometimes if there is no major momentum, we try to come up with something in which the losses are reduced and the probability increase. That was one reason that we try to play it out. Having said that, stock specific action is quite good. Keep overnight positions less, especially in index, but stock specific action is quite good. So play the momentum. And I think we have seen overall mixed sessions, but stock ideas have been quite good. So I think any other stock plays are there, Avinash? So DB Realty. DB Realty. Okay. I think the name of the stock has been changed. The rate is 191, right? Ravi Verma ji haven't mentioned the price range, so let's move Okay. to the next stock, ITC. ITC slow and steadily after a long consolidation from last almost 6 weeks. It is trading above 500 levels. Slowly, steadily, the setup is strong on monthly, weekly. We can expect good 3 to 4% rally. But being the nature of ITC, it's a slow mover. So 495 का support है, ऊपर में 515, 520 के लिए धीरे-धीरे ITC जा सकता है. So there is a query from a client कि why do we want to trade in sideways market? No trade is also trade. Guys, फिर आप ही लोग कहोगे कि हम लोग सेशन में आए थे, आप लोगों ने ट्रेड नहीं दिया, राइट? So we try our best कि हम लोग वही ट्रेड थे जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज ज्यादा हो. We wait हम लोग एंटर करने के पहले. So Arpit sir will take one or two queries. Yeah, we'll just take the last query and then we can close it out. Sure, Arpit sir. Your view on Tata Power. Tata Power. Okay, so Tata Power, if you see the monthly setup is trading in a range, weekly also multiple support near 405, upside 425, 430 hurdle zone है. Daily scale पे breakdown दिया है 50 के नीचे. So I think again the stock is stuck in a range. 415 का immediate support है, ऊपर में 435 का hurdle है. Consolidated to negative bias है, better to avoid. अगर कोई position फंसी है तो थोड़ा सा bounce अगर आता है 428, 430 तक का, better to exit. Great. So great. Thank you so much, Arpit sir. It was a great session. भले हमने profit नहीं कर पाया, we have entered and exit at the cost to cost only, but still we are expecting कि हमें कल profitable trade मिले in the Nifty. Thank you, Arpit sir. Let's also look forward for the BTST trade जो हमें दिया आपने, and we see upside in it. So thank you guys for joining. Thank you, Arpit sir. Yeah, thank you guys. Thank you all. See you all tomorrow for Nifty.